आईआईटी मंडी ने रिसर्च के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की है। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने कृषि और कागज के कचरे से कई मूल्यवान रसायनों का उत्पादन करने की विधि को इजाद किया है। खेती के अपशिष्ट और कागज के कचरे में सेल्यूलोज होता है। इस सेल्यूलोज को उपयोगी रसायनों, जैव ईंधन और कई औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त कार्बन में प्रभावी रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। आईआईटी के इस शोध का विवरण जर्नल बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स में प्रकाशित किया गया है, जिसको स्कूल ऑफ बायोसाइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर श्याम कुमार मसाकपल्ली, डॉक्टर स्वाति शर्मा और उनके शोधकर्ताओं में शामिल चंद्रकांत जोशी, महेश कुमार, ज्योतिका ठाकुर, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ यूनाइटेड किंगडम से मार्टिन बनेट, डेविड जेलिक और केआईटी जर्मनी से नील मैकिनॉन के सहयोग से तैयार किया गया है। खास बात यह है कि इस विधि को पेटेंट करवाया गया है और डॉक्टर श्याम कुमार मसाकपल्ली ने जानकारी देते हुए बताया कि सिलिकॉन्स को बनाने के लिए कई सूक्ष्म जीवों का विश्लेषण किया गया है, जो सेल्यूलोज को इथेनॉल और लैक्टेस में बदल सकते हैं। इसी को लेकर डॉक्टर श्याम कुमार मसाकपल्ली शोधकर्ता क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो, और ज्योतिका ठाकुर शोधकर्ता भी क्या कहती है वो भी सुनो। So this is stir tank bioreactor facility, which is currently running with the synthetic microbial consortia for cellulose to valuable conversions, basically having the thermophilic consortia. For example, we have set the bioreactors for 55 degrees Celsius. So here we have been converting the cellulose into valuables like cellulases, which are the enzymes for cellulose conversion, then the lactate and ethanol. Further, after bioprocessing of this cellulose, the residual cellulose as well as the microbial biomass goes for the pyrolysis, which has been integrated in this particular study. So right now we have been working on 250 ml bioreactors and 1 liter volumes were also tested for this particular process, and further scale-ups are also ongoing. As humans, we have been creating a lot of waste, especially cellulosic waste, paper, as well as agro residues result into lignocellulosic waste. This project is of very much importance, especially to generate value out of the waste. Now, the project is actually divided into 3 main phases, wherein in the phase 1, using the metabolic capabilities of hundreds of microbes, we designed consortia partners, mainly that led us to identify bacterial as well as fungal bacterial consortia partners, which can be tapped for further applications. As you can see in the phase 2, as an example, we have like host 1, which is microbe 1, which could be a thermophilic organism, which with the ability to produce cellulase, whereas the host 2 fermentative, the organism would be having fermentative capabilities, and this both work in synchronously in order to break down the cellulose and then utilize the released carbon to make valuables. The valuables can be enzymes like cellulases as well as platform chemicals like ethanol and lactate in this case. And then we moved on to the phase 3. In phase 2 has been carried in the bioreactors, and then we moved to the phase 3 wherein the residual unutilized cellulose as well as the microbes which are still lying in there can further be integrated with pyrolytic technique, leading us to the production of valuable carbon, which can be used for various applications. Now, the work actually resulted into a PhD, a patent, because the process works efficiently. We patented the process as well as a peer-reviewed manuscript. And it has several other outcomes in the form of, apart from patents and publications, we trained the human resources as well as several joint activities between India and Germany.